Good morning, students. Next topic, pair of linear equation in two variable, NCERT exercise 3.5, page number 62. For any system of linear equation, let us suppose a pair of linear equation is given, a1x plus b1y plus c1 barabar 0 and a2x plus b2y plus c2 barabar 0. These are the two linear equations in variable x and y, where a1 is the coefficient of x in first equation, b1 is the coefficient of y in first equation, and c1 is the constant quantity. Similarly, a2 is the coefficient of x in second equation, b2 is the coefficient of y in second equation, and c2 is the constant in second equation. So these are the two linear equations in variable x and y. Now for unique solution. What do you understand by unique solution? Unique solution means if we draw the graph of these two lines, then the graph of these two lines will intersect each other. It means it will have one and only one solution, that is called unique solution. So for the unique solution, condition will be a1 upon a2, that is coefficient of x in first equation upon coefficient of x in second equation. a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. This is the algebraic condition, and the geometrical condition. Whenever we will draw the graph of these two lines, then for unique solution, the graph of these two lines will intersect each other. Now second, for infinite many solution, for the given system of linear equation, the algebraic condition is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. And the geometrical condition is the line will coincide each other. Whenever we will draw the graph of these two lines, then one line will coincide to another line. So in this condition, the system will have infinite many solution. And the third condition, for no solution. इस सिस्टम के लिए नो सॉल्यूशन की अलजेब्रिक कंडीशन क्या है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. In this case, this is the algebraic condition, and if we draw the graph, then graph of these two lines will parallel to each other. On producing till infinite, the lines will never intersect, never coincide, so there will be no solution. So this is the unique solution, infinite solution and no solution के लिए algebraic conditions है, and these are the geometrical conditions. On the basis of these, now we will do the exercise 3.5. Yes, question number first. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, and infinite many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. So question number first part, the pair of linear equations are x minus 3y minus 3 is equals to 0, 3x minus 9y minus 2 barabar 0. On comparing with the standard form, a1 upon a2, the coefficient of x in the first equation, that is a1 is 1, a2 is 2. So a1 upon a2 is 1 upon 3. Similarly, coefficient of y, b1 upon b2 is minus 3 upon minus 9. So minus से minus plus हो जाएगा, 3 upon 9, that is 1 upon 3. Then c1 upon c2, that is minus 3 upon 2. So now, by simple observation, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. Therefore, lines are parallel to each other, so it has no solution. Now second question, 2x plus y minus 5 barabar 0 and 3x plus 2y minus 8 barabar 0. In these two equations, 5 and 8 was in right hand side, so we have took in left hand side. Now with comparing with standard form, a1 upon a2, that is 2 upon 3, b1 upon b2 is 1 upon 2, and c1 upon c2 is minus 5 upon minus 8, that is 5 upon 8. So by simple observation, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Therefore, lines will intersect each other, so it has unique solution. Now we will find the unique solution of this question by cross multiplication method. Question number second, the cross multiplication method से solution निकालने के लिए how we will do it? So the equation is 2x up
plus y minus 5 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. The cross multiplication से कैसे सोल्व करते हैं अपन? x अपॉन x के कोएफिशिएंट को अपन हाइड कर देंगे, y फर्स्ट इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, तो 1 into minus 8 that is minus 8 minus of a2 c1 that is 2 into minus 5 that is minus of 10, then minus y upon y के कोएफिशिएंट को अपने को हाइड करना 2 into minus 8 that is minus of 16 minus of 3 into minus 5 that is minus of 15 is equals to 1 upon constant upon again 2 into 2 4, so 4 minus of 3 into 1 that is 3. So this is the cross multiplication. Now x upon minus 8 plus 10 is equals to minus y upon minus 16 plus 15 is equals to 1 upon 1. So x upon minus 2 is equals to minus y upon minus 1, so minus minus plus, and that is 1 upon 1. Now comparing first with last, then x will be equals to minus 2 and y will be equals to 1. So this is the unique solution. Now question number first, third part. The equation is 3x minus 5y minus 20 is equals to 0, and second equation is 6x minus 10y minus 40 equals to 0. So here comparing with the standard form of linear equation, a1 upon a2 is 3 upon 6 that is 1 by 2, b1 upon b2 that is minus 5 upon minus 10 that is 1 by 2, and c1 upon c2 is minus 20 upon minus 40 that is 1 by 2. So by simple observation, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Therefore, system has infinite many solution, or the lines will coincide each other, or lines will coincide each other. Now second question is fourth part. X minus 3y minus 7 is equals to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. So by simple observation, a1 upon a2, that is coefficient of x in both equation 1 upon 3, coefficient of y b1 upon b2 minus 3 upon minus 3 that is 1 by 1, and c1 upon c2 minus 7 upon minus 15 that is 7 upon 15. So by simple observation, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. So the system is unique solution. If the system is unique solution, then we have to find the solution of this system by the cross multiplication. So what is the cross multiplication? Cross multiplication method is for the value of x, how we will write? X upon, then minus 1 y upon, and then 1 upon. Whenever we are finding the denominator of x, then we will hide the coefficient of x, और पहली इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज -3 into -15. So -3 into -15, फिर बीच में माइनस लगाना, देन सेकेंड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट से, तो बीच में माइनस है, देन -3 into -7. दैट्स व्हाई मैंने इसको ब्रैकेट में रखा ताकि आप कैलकुलेशन में रॉन्ग नहीं करें. एक बार फिर से देखिए, जब x अपॉन निकाल रहा हूं तो x के कोएफिशिएंट को हाइड कर दूंगा, पहली इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट से, और फिर दूसरी इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को पहली इक्वेशन में कांस्टेंट और बीच में माइनस लगाना. फिर -y अपॉन -y क्यों लिख रहे हैं? इसका कारण ये है कि ये पहली इक्वेशन में देखो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल को मैं लाइन सपोज करूं ऐसे, और वर्टिकल को मैं कॉलम सपोज करूं, तो ये x की पोजीशन है और ये y की पोजीशन है. इसको काउंट कैसे करेंगे कि x की पोजीशन पहली लाइन पहला कॉलम, दैट इज x 1 1 पोजीशन पे अगर 1 और 1 का सम अगर इवन आता है तो उसके पहले प्लस साइन आएगा, और y की पोजीशन पहली लाइन और दूसरा कॉलम दैट इज 1 2 पोजीशन पे, हियर 1 + 2 ओड आ रहा है, इसलिए उसके पहले अपन माइनस साइन लगाते हैं.
क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। सो सी, जब y के कोएफिशिएंट की वैल्यूज निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, y को हाइड कर दूंगा, x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -7 से। तो 1 into -5, that's why it is known as cross multiply। 1 into -15 माइनस ऑफ 3 into -7। देन जब कांस्टेंट के लिए निकाल रहा हूं तो कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, तो 1 into -3 into -3। सॉल्व करेंगे तो x upon 45 minus 21 minus y upon -15 plus 21 और 1 upon -3 plus 9। So x upon 24 is equals to minus y upon 6 is equals to 1 upon 6। Now first को लास्ट से इक्वेट करेंगे तो x upon 24 बराबर 1/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/6, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो minus y upon 6 is equals to 1 upon 6, तो y बराबर -6 upon 6, that is -1। So the unique solution is x बराबर 4 and y is equals to 1। Pause the video and note down। Question number second, for what value of a and b will the following pair of linear equation has infinite number of solutions? The system is 2x plus 3y minus 7 is equals to 0, a minus b into x plus a plus b into y minus of 3a plus b minus 2 is equals to 0. These are the two pair of linear equations, therefore system of linear equation. Whenever two linear equations are given, then in joint form we will term it as system of pair of linear equation. So the system already given that system has infinite many solution, ऐसा क्वेश्चन में आपने को दे रखा है। So the algebraic condition is coefficient of x in first equation upon coefficient of x in second equation बराबर coefficient of y in first equation upon coefficient of y in second equation equals to constant in first equation upon constant in second equation. So a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2। This is the algebraic condition for a system has infinite many solution। Now with the given system of linear equation से compare करेंगे तो a1 2 है और a2 आपका a minus b है। So a1 upon a2 is 2 upon a minus b। Similarly b1 upon b2 3 upon a plus b is equals to -7 upon minus of 3a plus b minus 2, माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक बार इस फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करेंगे, एक बार फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज द अलजेब्रिक कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में अननोन a और b की वैल्यू निकालना है। तो एक बार मैंने फर्स्ट को इक्वल टू लास्ट पुटअप किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6a plus 2b minus 4 is equals to 7a minus 7b। सारी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले लिया तो -a plus 9b बराबर 4, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो ये -a प्लस हो गया, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, दैट इज a minus 9b is equals to -4। एक रिलेशन आ गया a b और कांस्टेंट में, इसको अपन ने नंबर 3 पुटअप किया। सिमिलरली बाय फर्स्ट टू अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 2 upon a minus b is equals to 3 upon a plus b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a plus 2b बराबर 3a minus 3b। राइट हैंड साइड में लेंगे तो -a plus 5b बराबर 0, दैट इज a minus 5b बराबर 0। थ्रू आउट वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारे पास a और -b में दो रिलेशन है, एक बार a minus 9b बराबर -4 है, दूसरा a minus 5b बराबर 0 है। इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 का अब क्या किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट किया। तो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और 0, नाइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -a प्लस a कट जाएगा, -9b प्लस 5b दैट इज प्लस 4b इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट इज इक्वल्स टू ऑफ -4। तो हियर दिस इज इक्वल्स टू बिकॉज़ -4b था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो b बराबर हो गया 4/4, दैट इज b की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू 1 को अपन फोर्थ इक्वेशन में a 5b में जहां-जहां b है वहां 1 पुट अप कर देंगे तो a 5 into 1 बराबर 0, that is a बराबर 5। So a की वैल्यू 5 है, b is equals to 1। Please pause the video and note down। Now question number second part, for what value of a will the following pair of linear equation has no
solution. So the system is 3x plus y minus 1 बराबर 0, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus of 2k plus 1 is equals to 0. This is the system of linear equation, and we have given that system has no solution. So first, by simple observation, we will find a1 upon a2 is equals to 3 upon 2k minus 1, b1 upon b2 is 1 upon k minus 1, and c1 upon c2 is minus 1 upon minus of 2k plus 1. Now for no solution, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. So simply 3 upon 2k minus 1 will be equals to 1 upon k minus 1 not equals to 1 upon 2k plus 1. Now by this condition we have to find the value of k. So on comparing these first two steps, 3 upon 2k minus 1 will be equals to 1 upon k minus 1. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into k minus 1 is equals to 2k minus 1. तो 3 into k, 3k minus 3 is equals to 2k minus 1. So 3k minus 2k will be equals to minus 1 plus 3. So k will be equals to 2. So please pause the video and note down. Question number 3. The system is 8x plus 5y minus 9 बराबर 0 and second equation is 3x plus 2y minus 4 बराबर 0. This is the system of pair of linear equation. Now we have to solve this system, that is we have to find the value of x and y first by the substitution method and second by the cross multiplication method. So what is the substitution method? Substitution method में अपन क्या करते हैं, given पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y में फाइंड आउट करते हैं. सो सेकंड इक्वेशन से 3x विल बी इक्वल्स टू -4 को राइट में ले जाऊंगा +4 और 2y को राइट में ले जाऊंगा तो -2y. तो 3x इज इक्वल्स टू 4 2y, x विल बी इक्वल्स टू 4 2y अपॉन 3. इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y में 4 2y अपॉन 3 है. अब मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 8x, x की जगह पुट अप किया 4 2y अपॉन 3 प्लस 5y एंड -9 को राइट में ट्रांसफर कर दिया +9. यहां देखिए 5 अपॉन 1 और यहां 8 into 4 2y अपॉन 3 है. 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32 -8 2 जा 16y अपॉन 3 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 1. एलसीएम लेंगे, लेफ्ट में 3 आएगा तो 32 16 प्लस 15y इज इक्वल्स टू 27. यहां से अपन ने y की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू आ रही है आपकी +5. नाउ y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3x plus 2 into 5y बराबर 4. So 3x will be equals to 4 minus 10. तो 3x is equals to -6. So x will be equals to -6 upon 3. कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दिया -6 upon 3. That is x की वैल्यू आ गई आपकी 2 and y की वैल्यू 5. Now for the cross multiplication के लिए अगेन अपन सिस्टम को ax plus by plus c is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. फिर x अपॉन जब वैल्यू निकालते हैं तो x के कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं. पहली इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से, बीच में माइनस, फिर सेकंड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट से. फिर जब y की वैल्यू निकालते हैं तो क्योंकि y की पोजीशन ऑड है इसलिए -y लगाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 into -4 माइनस ऑफ 3 into -9 और जब 1 अपॉन निकालते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं 8 into 2 -3 into 5. नाउ सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -20 plus 18 equals to -y अपॉन -32 plus 27 is equals to 1 upon 1. So x upon -2 is equals to y upon +5 is equals to 1 upon 1. So x is -2 and y is equals to 5. So this is the solution of equation system by substitution method and cross multiplication method. Please pause the video and note down. Yes, the next question is question number 4. And in this question number 4, first of all we have to form the pair of linear equation and then we have to solve. So the question number first, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay rupees 1000.
as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. So let X be the fixed charge of the food and Y be the charge for per day. Then, as per the given condition, fixed charge is rupees X, and for 20 days he will pay 20 into Y. So total expenditure is 1000. In second case, fixed charge is X, and for next 26 days, 26 into Y is equals to 1180. So these are the two linear equations. Now, to find the solution of these linear equation, you can use substitution method, elimination method, and cross multiplication. So simply subtracting equation second from first. So this x will be cancelled out by minus 6, 20 minus 26 minus of 6y is equals to minus 180. Minus minus plus y will be 180 upon 6 is equals to 30. Now substituting this value of y is equals to 30 in equation number first, x plus 20 into 30 barabar 1000, 20 into 30 will be 600, so x barabar 1000 minus 600 is equals to x barabar 400. So the fixed charge of that hostel is 400 and per day mess charge is 30 rupees. Now second question, there is a fraction, and if we subtract 1 from the numerator, then fraction become 1 by 3. So let the fraction be x upon y. If we subtract 1 from numerator, that is x minus 1 upon y is equals to 1 by 3. Cross multiply करेंगे 3x minus 3 बराबर y. So 3x minus y is equals to 3, the first equation. Second condition is that when we add 8 to denominator, then fraction become 1 by 4. So x upon y plus 8 is equals to 1 by 4. Cross multiply करेंगे 4x is equals to y plus 8. So 4x minus y is equals to 8. Now on subtracting these two equations, so this minus will be plus, plus will be minus, and plus will be minus. Now on adding 3x minus 4x minus x barabar minus 5. So x barabar 5. So on substituting the value of x in equation number first, 15 minus 3 is equals to y. So y will be equals to 12. So the required fraction is 5 upon 12. Please pause the video and note down. Next question, fourth question, part third. The question is, yes, scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. So let the number of right answer and the wrong answer be x and y. Then as per given condition, yes, getting 3 marks for each right answer. Right answer are x, so total marks he will get 3 into x, and 1 wrong answer. So wrong answers are y. So 3x minus y barabar 40 is the scoring. In second case, he had 4 marks been awarded for right answer. So total number of right answer are x. So total obtaining marks will be 4 into x, and 2 marks being deducted for incorrect answer. So 2 into y is equals to 50. Now these are the two equations. 4x minus 2y barabar 50, dividing both sides by 2, so 2x minus y barabar 25. Now we have to solve equation first and second. So on subtracting equation second from first, 3x minus y barabar 40, 2x minus y barabar 25. So on changing the sign, plus minus, minus plus, and plus minus. So this minus y plus y will be cancelled out. 3x minus 2x will be x. 40 minus 25, that is 15. So put x barabar 15 in the equation number first. So 45 minus y barabar 40. So 45 minus 40 barabar y. So y is equals to 5. So the correct answers are 15 and the wrong answers are 5. Now second question places A and B
are 100 kilometer apart on a highway. There are two places, that one is A and another is B, and the total distance between is 100 kilometer. Now question is that one car start from A, एक कार कहाँ से start होती है? A से, और दूसरी कार start होती है B से. One car start from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. And if they travel toward each other, then they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? So let the speed of first car be x kilometer per hour and the speed of second car be y kilometer per hour. So the speed of both car in same direction. अगर वो दोनों same direction में चलती हैं, तो speed of both car will be resulted will be x minus y. ठीक है, कि A से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड अगर 20 पर से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड से ज्यादा है, then they will meet each other, then the resulted speed will be x minus y. अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, A से चलने वाली कार B की तरफ जाती है और B से चलने वाली कार A की तरफ आती है, then speed of both car in opposite direction will be x plus y किलोमीटर पर आवर. अब फर्स्ट केस में जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाती है. इसका मतलब 5 into x minus y will be equals to 100 किलोमीटर, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर वो एक दूसरे से मिलेगी. तो 5 से डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई बराबर 20. सेकेंड केस में जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो 1 घंटे बाद मिल जाती है. तो 1 घंटे में उनके द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो है टाइम इनटू स्पीड बराबर 100 किलोमीटर. सो x plus y बराबर 100. Now if we add equation first and second, then this minus y plus y will be cancel out. X and x 2x will be 20 plus 100 120. So 2x बराबर 120, x बराबर आएगा 120 upon 2, that is 60 किलोमीटर पर आवर. So first कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. अब किसी भी एक इक्वेशन में लेट अस सपोज हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 60 पुट अप कर दें तो 60 प्लस y बराबर 100. So y will be equals to 100 minus 60, that is equals to 40. So speed of first car is 60 km per hour and speed of the second car is 40 km per hour. Please pause the video and note down. Yes, the last question, fifth or fourth question. The question is the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, area increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. So here let the rectangle be A, B, C, D, where length is x and breadth be y. Then the area of this rectangle will be equals to area बराबर x into y square unit. So as per given condition, now if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3, then new area will be x minus 5 into y plus 3. And in this case, the area reduced by 9 square units. So xy, previous area, now new area will be xy minus of 9. In second case, when length is increased by 3 and y is also increased by 2, then the new area will be x plus y plus of 67, means 67 square unit area will be increased. So in first condition, x minus 5 into y plus 3 barabar xy minus 9. On solving, we will get this linear equation in variable x and y. And in second condition, x plus 3 into y plus 2 will be equals to xy plus 67. On solving, we will get this equation 2x plus 3y minus 61 is equals to 0. Now using cross multiplication method, we will find the value of x and y. So for the values of x, first we will hide the coefficient of x. So x upon minus 5 into 61 is equals to 305
minus of 3 into minus 6, that is plus 18. Then for the values of y, minus y because y lies in first row and second column odd position, इसलिए मैं minus sign put up कर रहा हूँ. Now minus y upon 3 into minus 61 minus of 2 into minus 6. Then for constant 1 upon 3 into 3 minus of 2 into minus 5. So x upon 323 is equals to y upon 171 is equals to 1 upon 19. So on comparing first and last, so x will be equals to 323 upon 19, that will be cancelled out by 17 times. And comparing last two values, y upon 171 बराबर 1 upon 19, so y will be equals to 171 upon 19, that is equals to 9. So x is 17 and y is equals to 9. So please pause the video and note it.